Am I audible? Hello everyone. This is Abrir Ahmed here. I am a representative of the Youth General Assembly here. I am here with my fellow moderator Aliza and our guest speaker for today, Miss Yumna Zahir. Um, we are both representatives of Youth General Assembly, like I mentioned, and we will be conducting a seminar today on why education is more predominantly a feminine profession. Youth General Assembly is the first youth-led parliamentary initiative in Pakistan's history, playing an effective role in administrative, political, economic, and social processes while honing the leadership skills of youth. Youth General Assembly takes pride in being the parent organization of three youth-led national initiatives, namely YGA Legal Forum, YGA Business Forum, and YGA Media Forum, which have the privilege on working on diverse activities and engaging youth from different academic and professional backgrounds. Talking about this particular initiative, YGA thinks it is time that we all see gender as a spectrum instead of two sets of opposing ideals. It is our duty to create awareness among all nations, recommend solutions, and strive to resolve issues of female in Pakistani society. YGA is giving a platform to females from all professions to come together and talk about their issues. Politicians, lawyers, judges, bureaucrats, lawmakers will join us in the upcoming webinars. Join us so that you can also be part of the solution and let us together transcend the barriers of inequality in this society. This series will include webinars discussing the gender disparity in the education sector, in the employment sector, in politics, as well as in health. The causes of disparity and why do women lag behind, what steps government and civil society has taken to address these issues, and why does the gap still exist are just some of the things that we'll be discussing today. Our guest speaker for today is Ms. Yumna Zahir. Ms. Yumna Zahir is an educationist and director of Training Institutes, Ustad, who is always ready to take a grip on new technology. For the last 4 to 5 years, she's faced 360-degree changes in our schooling, and she's always ready to be part of these changes. She believes that school is the main institution where you are going to build nations, and for this, we have to put our hands together so that we can collaboratively ensure that education is a progressive field. Thank you so much, Ms. Yumna Zahir, for being here with us today. Assalamu alaikum. Thank you for calling me today here to express myself. Thank you so much for being here, Ms. Yumna Zahir. My first question for you is not exactly a question, it's just sort of an anecdotal account which I would like for you to explain to me. Growing up, I know just up until middle or secondary schooling, हमारे ज़्यादातर teachers female होते थे. कोई आपको मेरी आवाज़ आ रही? Yes, बिल्कुल. Yes, you are audible. Am I not audible to you guys? No, you are audible. I guess something is wrong with the internet. It's fine. You can speak. Okay. So, Ms. Yumna, what I was trying to ask you was that up until a certain point in my life, हमारे middle school, high school तक हमारे ज़्यादातर teachers ख़वातीन होती थी. The only male teacher that we most likely had was a PE teacher, a PE instructor. उसके अलावा सारी teachers औरतें होती थी. आपको लगता है इसकी कोई ख़ुसूसी वजह है जो औरतें इतनी ज़्यादा मिक़दार में तालीम के फील्ड में आना चाह रही हैं? Ms. Yumna, can you hear me? I guess she's having some internet issues. We have our other guest here. You can ask questions. Okay. Ms. Sabah Raza, literal introduction for her. We have Ms. Sabah here with us today. She's an educationist by profession. I'm sorry. I mean, Is there a question? You can by heart पढ़ाना नहीं शुरू
तब तक ये टीचिंग का प्रोफेशन जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर नॉट ओनली हियर कि आप जो है वो एक नॉलेज ट्रांसमिट कर रहे हो, आप यहाँ होते हो वैल्यूज, सारी चीजें आपके स्टूडेंट्स में ट्रांसफर हो रही होती हैं और कहीं ना कहीं वो आपको उनकी झलक नजर आना शुरू हमारे माशरे में कि एज टीचिंग इज अ वेरी लो ग्रेड प्रोफेशन, यानी we've unfortunately gotten द disconnected टीचर्स, from Miss ठीक है, तो Yumna's मिनिमम एम आई ऑडिबल? Miss Yumna, yes, you're audible. If you please don't mind repeating all that you said, your voice was lagging a little bit. My voice is flagging. Okay, just hold on. Now, is it clear? Yes, it's much better now. Thank you, Miss Yumna. ओके डन। सो आई वाज सेइंग जो हमारे पास है वो बहुत लो वेज हम टीचर्स को पे कर रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मेल्स होते हैं वो यूजुअली इस प्रोफेशन में आना नहीं चाहते, ठीक। और दूसरी एक और बहुत बड़ा रीजन है वो ये कि हम शुरू से अगर हम अपने वालदैन से लें तो हम अपने वालदैन को तो देखते हैं कि हमारी वालदा थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, सॉफ्ट स्पोकन होती हैं एज कम्पेयर टू अवर फादर, और वो चीजों के सलूशन की तरफ जा रही होती हैं रादर देन परमानेंट जा रही होती हैं, रादर देन उसको वक्ती तौर पे सॉल्व कर दिया जाए उससे, ठीक। तो मेरा ये मानना है कि जो मेल्स होते हैं उनके अंदर टेम्परामेंट की थोड़ी कमी होती है, जिसकी बेस पर वो बहुत छोटे बच्चों के साथ या जो स्कूल लेवल के बच्चे होते हैं उनके साथ डीलिंग में बहुत मतलब पीछे होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू वर्क एज टीचर ओवर देयर। What my point of view is this. Okay, so I guess our moderator just lost the connection of internet connection. I would like to ask a few questions to you. I would like to address Ma'am Sabha. As we're talking about the education disparity and there are certain honorable, respectable jobs that is only considered for women, that it is only the teaching and the doctor when a girl is growing up. The parents mostly says that okay, you're going to be a doctor, okay, you're going to be a teacher. That there's a conception, there is a mindset to in our parents, okay, this profession is right for you and this profession is not. How can we take out the factors, how can we change the mindset that every job has its own dignity, but for girls there are certain jobs which are considered to be respectable for them. How can we change this mindset? All right, thank you so much, Ineza Mujib. And am I audible to everyone? Yes, you're audible, just your pitch is very low, just make sure you're First of all, we need to change the first perception, that is adopt a teaching profession not by chance but by choice. Okay, and parents should inculcate in their children as well that teaching is a noble profession that can be chosen. And perception of man is that caring and nurturing children are not their nature of job. Besides that, teaching profession receive relatively smaller wages compared to other. I really agree with the Yumna that it's a profession occupation in the private sector. Salary is barely enough to make ends meet because of they are bread earner, they are breadwinner of their family. वेजेस बहुत ज़्यादा हमारे पास कम है। जो परसेप्शन है पेरेंट्स का शुरू से ही डॉक्टर और इंजीनियर और इस तरह के परसेप्शन वो बच्चों का माइंडसेट ग्रो हो रहा होता है, जैसे स्कूल ऑफ थॉट से वो लोग आते हैं। टीचिंग फॉर मैन शायद वो एक इसलिए अडॉप्ट नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज के पे स्केल इतना नहीं है, पर्क्स नहीं है। एक जो 9 to 5 आपकी जॉब होती है उसमें आप अपने सारे चैप्टर्स को क्लोज करके घर पे आते हैं। एक टीचिंग प्रोफेशन ऐसा है कि 24/7 जॉब है। आपने घर आके भी सोचना है कि नेक्स्ट डे आपने बच्चे को क्या पढ़ाना है।
बहुत ज़्यादा मेहनत तलब ये प्रोफेशन है। तो शायद इसलिए भी मैं समझती हूँ कि जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा अडेप्टेबल होती हैं, उनकी नेचर बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती है कि बच्चों को ईजिली केटर कर सकती हैं। Yes, exactly. From your point of view, we can see that there is a major problem you both are talking about is the smaller wages. We do not get the proper amount of wages for the women who are seeking education or who are providing education. So, what tools do you recommend to, wipe out this factor from the education sector? कि उनको proper wages दी जाए, उनको proper जो उनके credits हैं वो उनको दिए जाए, और उनको accommodation दी जाए हर चीज में, either it's quota system or on any other basis. देखिए, मोस्टली हमारे पास टीचर्स ऐसे भी हैं जो कि सिंगल पेरेंट भी होते हैं, जो अपने घर को चला रहे होते हैं और बहुत हार्ड वर्कर होती हैं। उसके बावजूद 25,000 रुपीज़ उन्हें मिल रहे होते हैं, 20,000 25,000 स्टिल। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो 18,000 पे कर रहे हैं, कुछ 12,000 पे कर रहे हैं। आपके पास टाइमिंग्स इतने हाई होते हैं, 7:30 टिल 2 o'clock। इसके बाद आप इस काबिल नहीं रहते कि आप कोई पार्ट टाइम अगेन कोई ढूँढ सकें। आप मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं, फिज़िकली स्ट्रेस्ड होते हैं। तो इन चीज़ बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कंसीडर किया जाना चाहिए। एक तो वर्कलोड, बहुत से स्कूल्स के मैनुअल में, एचआर मैनुअल में ये लिखा हुआ होता है कि 80% लोड आपने डालना ही डालना है टीचर पे। इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए। सेकंड थिंग कि जितना आप काम उनसे ले रहे हैं उतने वेजेस भी दें, उतने पर्क्स भी दें, उन्हें अलाउंसेस दें। आजकल फ्यूल का क्या हाल है पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है। मोस्टली जो टीचर्स हैं, मैं फेसबुक देख रही थी, मैं सोशल मीडिया देख रही थी कि परेशान हैं कि किसी तरह से कोई ऐसा साथी मिल जाए जो उनके रूट का हो और उनका बजट थोड़ा सा कम हो जाए। तो टीचर्स की बहुत सी चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ, अगर उनकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग नहीं होगी तो वो बच्चों में बहुत सी चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगी। हैप्पी टीचिंग नहीं अच्छा, हो मेरे सकेगी, हैप्पी लर्निंग नहीं हो सकेगी। ख्याल यस से प्लीज़। मेरे ख्याल से जो सबसे पहला काम हमारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को करना चाहिए, दे शुड लुक आफ्टर कि व्हाट वेजेस आर गिवन टू द टीचर अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड अकॉर्डिंग टू देयर टीचिंग स्किल्स। अच्छा, क्वालिफिकेशन और टीचिंग स्किल्स ये दो अलग अलग चीजें हैं, यूजुअली लोग इनको मर्ज कर देते हैं। ठीक है, टीचिंग स्किल्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपनी जगह, जो अगर आपकी क्लास में प्रेजेंट नहीं होगा तो आपके बच्चे वो क्रिएटिव माइंड नहीं बन पाएंगे, आपके बच्चों की प्रोडक्शन वैसी नहीं हो पाएगी। सो यू नीड टू बी कि भाई हमारी टीचर के पास ये स्किल्स मौजूद हैं और ये क्वालिफिकेशन मौजूद है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस वी आर गोइंग टू पे सर्टेन अमाउंट, जो कि आपका प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से तमाम स्कूलों पर पाबंद होना चाहिए उन्हें इस बात का कि वो इतने देंगे, बिकॉज हर स्कूल एक डिफरेंट अमाउंट पे कर रहा है। और मतलब मैं कुछ ऐसे स्कूल्स को भी जानती हूँ जहां पर आपने इंटर पास लड़कियों को रख लिया 8-8 9 9 हजार रुपए में, बट 8-8 9 9 हजार में आप बच्चों के फ्यूचर से खेल रहे हो। यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग अ क्वालिटी थिंग, मतलब ओवर देयर। और दूसरा फिर क्या कि वो बच्ची तो 8 हजार रुपए उसके लिए पॉकेट मनी मिल गई, उसको एक अच्छी पॉकेट मनी मिल गई। ठीक है, बट जो एक टीचर, जो एक घर चलाने वाली टीचर जब उसकी जगह जाती है और उसको भी वही सेम अमाउंट ऑफर किया जाता है, तो हाउ कैन शी एक्सेप्ट दैट अमाउंट? आप बताएं, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा नहीं हो सकता ना। 8 हजार में ना घर चल सकता है, ना आपके कन्वेंस का एक्सपेंस निकल सकता है, ना आपकी कोई और चीज निकल सकती है। सो ये एक सबसे मेजर थिंग है जो कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को देखनी चाहिए। ओवर टाइम स्कूलों में आपके 60-70 बच्चे हैं और आप उन 60-70 बच्चों के लिए टीचर को 6-6 7-7 बजे तक बिठा रहे हो, एंड यू आर नॉट गोइंग टू पे अ सिंगल पेनी फॉर दैट। दिस इज ऑल्सो अ क्राइम। मतलब आप उस टीचर का भी टाइम कंज्यूम हो रहा है, वो चाहे वो अपना जो है क्या कहते हैं कोई और पार्ट टाइम कर ले, वो कुछ कुछ भी कर सकती है, शी कैन डू एनीथिंग। तो वो चीजें यहाँ पे कवर आउट होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को टीचर्स से मतलब एम्प्लॉय के नहीं, एम्प्लॉयज के हिसाब से भी और एम्प्लॉयर्स के हिसाब से भी, दोनों के हिसाब से एक रूल्स एंड रेगुलेशन सर्टेन उनको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए स्कूल्स।
Exactly, that was very thought provoking. There are students and they are just metric pass into below the belt courses. They can making out their pocket money out of them, and they can working on that. But still, there are other teachers and other housewives who are being a breadwinner for their houses. But they're not getting the proper wages out there. There is a difference, and for that we will be making out some tools how to make that either surveys or either proper functioning or either work plan proper. But do you think we are here to talk about education of women, basically women empowerment in education sector? And there are different statistics in which we see the women are lagging behind in different factors in education system and mostly in higher education system. So, do you think curriculum play a very important role in, major dropout of the girls from the higher degree education? की तरफ भी वैसे ही रुझान होना चाहिए और उनको वैसे I guess her internet is not working properly. Mansala, you can answer that. Can you please repeat your question? I was talking about the curriculum, how curriculum can play an important role in the higher education for women, because there are major dropouts level we can see out there for the higher education system for girls basically. So do you think curriculum play a very important role for providing them better education? Yes, 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 curriculum plays an important role And for how can we students. pave the way for that? Sorry, how can? How can we pave a proper way out? How can we put a proper work plan to provide a better curriculum out there for students for young generation so that they can not face any problem out there again? ओके देखिए ये एक पूरा सिस्टम है जिसको बहुत सी चीज़ों को सही होना ज़रूरी है। बेसिकली अब जो फ़ोकस किया जा रहा है वो करिकुलम डेवलपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस हो रहे हैं कि उनको ट्रेन किया जाए और एक अच्छा करिकुलम डिज़ाइन किया जाए स्कूल्स में। मैं बहुत से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को जानती हूँ जो कि वाक़ई अपना इनपुट दे रहे हैं और स्कूल्स के करिकुलम को डिज़ाइन करके उन्हें देते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इवन टीचर्स की अपनी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आजकल स्कूल्स में लो पे स्केल पर टीचर को हायर किया जाता है, उसे एग्री किया जाता है और उसके बाद फिर उसे ट्रेन किया जाता है, उसे ग्रोथ दी जाती है, लेकिन उसके पे स्केल को इतना नहीं बढ़ाया जाता। उसमें जो करिकुलम डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं उसमें टीचर की ग्रोथ में। बट द थिंग इज दैट कि Ma'am, your Sabha, mic is you get muted. muted. Yes, Sabha get muted. Ma'am Shimna, you can answer that. Ma'am, your mic is Okay, muted. so actually, Sabha is right. Sorry, You can continue, sure. sorry, Unesa, you are okay. सबा वॉज राइट कि हमारे यहाँ जो टीचर्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके ऊपर कोई खास तवज्जो मतलब उस तरह से नहीं दी जाती सैलरी के प्रोस्पेक्टिव से। तो बाकी तमाम चीज़ों में तो उनको देखा जा रहा होता है कि हाउ एक्टिव दे आर, हाउ एक्टिव लर्नर दे आर, हाउ एक्टिव परफॉर्मर दे आर, बट फ्रॉम सैलरी प्रोस्पेक्टिव दे आर नॉट सीइंग इट कि कितना ग्रोथ होना चाहिए उसका एक्चुअल। और उसकी वजह से क्या होता है कि यूजुअली टीचर्स जो स्कूल जो होते हैं वो टीचर्स को रिटेन नहीं कर पा रहे होते हैं और उस ना रिटेन करने की वजह से दोनों के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा होता है। उस टीचर के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा होता है और स्कूल्स के ऊपर भी आ रहा होता है, क्योंकि टीचर अगर बार बार जॉब स्विच करेगी तो ऑब्वियसली उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा इस बात का। ठीक, अच्छा, लेकिन क्योंकि वो मतलब हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो एक जगह से जब दूसरी जगह जाए तो वो कुछ ग्रोथ के साथ जाए। ठीक है, वो ना सिर्फ सैलरी के प्रोस्पेक्टिव से हो बल्कि वो उसकी डेजिग्नेशन के प्रोस्पेक्टिव से भी हो। तो यूजुअली जब खवातीन दूसरी जगह अप्लाई करती हैं
आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है और आप जा रहे हो कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई करने या किसी और ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां आप वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, एज यू हैव वर्क विद योर प्रिंसिपल आल्सो, तो आपको उस तरह से कंसिडर नहीं किया जाता। आपको बहुत लो स्केल पे रखेंगे वो उस वक्त भी, और फिर आपको उधर से जो है वो कहेंगे कि हमारे हिसाब से आपके अंदर ये मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये मौजूद हैं और इनकी वजह से जो है ना वो आपको हम उस जगह पे नहीं रख सकते। ठीक। और दूसरा मेल डोमिनेंसी जो है उसकी जो मेन रीजन है मुझे जो नजर आती है कि मेल डोमिनेंसी के आपका जो बाहर की जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि स्कूल का जो पूरा सिस्टम होता है तो इट इज नॉट ओनली एन एक्सटर्नल सिस्टम, देयर इज एन सॉरी इट इज नॉट ओनली एन इंटरनल सिस्टम, एक एक्सटर्नल सिस्टम भी होता है जो आपका वर्कआउट कर रहा होता है, जहां आपको बहुत सारे लोगों से डील करना होता है। तो उस डीलिंग में खवातीन यूजुअली पीछे होती हैं और उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि खवातीन कर नहीं सकती, यू कैन ट्रेन दैम, आप उनको ट्रेन करोगे तो वो बिल्कुल परफेक्टली उस जॉब को आपको करके दिखाएंगी। और ऐसा मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पे कि जब आपकी टीचिंग की बात हो तो आप मतलब फीमेल्स को प्रेफर कर रहे होते हो, जब आपके असिस्टेंट की बात हो रही होती है कि प्रिंसिपल के असिस्टेंट किसको रखना है तो दे आर टॉकिंग अबाउट मेल बिकॉज दे कैन हैंडल बोथ सॉर्ट ऑफ जॉब, द इंटरनल वन एंड द एक्सटर्नल वन बोथ। तो इस वजह से यहाँ पे लोग प्रेफर कर रहे होते हैं। और एक रीजन ये मैंने देखा है जो कि थोड़ा सा वियर्ड है, बट लोग कहते हैं कि ट्रैवलिंग इश्यूज आ रहे होते हैं खवातीन को यूजुअली, तो उस वजह से भी लोग प्रेफर करते हैं कि नहीं मेल्स को तो दे कैन इजीली गो ऑन बाइक एंड दे कैन डू ऑल द स्टफ ओवर देयर। तो ये रीजंस हैं। अच्छा, इनको कवर करना कोई मुश्किल बात नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से ये ऐसा नहीं है कि ये कवर नहीं हो सकते हो। ठीक, हम चाहें तो हम बहुत आसानी से जो है वो इस कल्चर को कवर कर सकते हैं और हम जो है वो उस जगह पर आ सकते हैं जिस जगह पर हम आना चाहते हैं। बट इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें अपने लोगों के माइंडसेट्स को भी बदलना होगा Yes, और वो exactly. I was माइंडसेट्स हमारे स्कूल एजुकेशन है उसके थ्रू ही हम बदल सकते हैं। mhm. I was disconnected actually. Exactly. I was saying curriculum development has a broad scope, and it's not only about the school, the learners, and the teachers. It is also about the development of society in general. You know that it's a road map that you have to follow. एग्जैक्टली। स्टेप बाय स्टेप अगर आप नहीं चलेंगे, आप प्रोफेशनली डील नहीं करेंगे तो बहुत सी लैकिंग आएंगी नॉट इवन इन सोसाइटी। आपके बच्चे डिस्ट्रैक्ट होंगे, उनको एक सही एजुकेशन प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, आपके टीचर्स ग्रोथ नहीं हासिल कर पाएंगे और आपका स्कूल नहीं ग्रो हो पाएगा। इट्स अ टीम वर्क और इस टीम वर्क में करिकुलम का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। Exactly, ma'am. It's very important that we should have teachers training and a positive curriculum. So if we talk about the positive curriculum, there should be some courses, there should be some short courses, some webinars out there that they can carry out the proper education. So do you think there are some courses you guys can suggest to our course to our subjects? Just may they could be helpful, this may they can play important role for the women education out there, because we are here talking about the curriculum again, and curriculum can play very important role for women education out there. So there should be some courses, and what kind of courses would you suggest कि अगर हम इनको रखते हैं, उनको include करते हैं to our subjects, that could play a very important role? Just to upgrade yourself, you have to be a learner. A teacher is a learner actually. आप डे टू डे अपने आप को लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे नहीं कनेक्ट करेंगे, आप ग्रोथ नहीं अवेल कर सकते। करिकुलम डेवलपमेंटल के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, टीच ऑनलाइन है जो कि बहुत रीजनेबल रेट्स में कोर्सेज करवाती हैं, स्किल डेवलपमेंट है, ब्रिटिश काउंसिल है, आपके कोर्सिया COURSEA, मुझे सही से स्पेलिंग्स की याद नहीं है, कोर्सिया ही थी आई गेस, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो फ्री कोर्सेज भी करवाता है। तो आप ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज करके अपने आप को अपग्रेड ज़रूर कर सकते हैं टीचर्स। I'm not sure if this has been discussed earlier, but one thing that I've noticed is that junior school levels, like up until maybe grade 8, you see that there's a saturation of female teachers.
But as soon as you move up a little bit higher to college and universities, you start getting in male professors and male teachers in there too. What do you think changes between these ages and between this education system for there to be this addition of male teachers to but at a higher up level? ऐसा क्या होता है कि वो अच्छा फिर चेंजेस जी प्लीज अच्छा, कंटिन्यू। इस बारे में मैंने अगर आप जब डिसकंटिन्यू हो गई थी तो मैंने थोड़ी-सी बात की थी कि एक्चुअली होता ये है कि जो हायर लेवल पर होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी एज़ सच यानी आप कॉलेजेस में जब जाएँगे और कॉलेजेस में आप अपने प्रोफ़ेसर्स को देखते हैं या हमने भी जो देखा, तो कभी उनको हमारे रजिस्टर्स वैसे नहीं चेक करने पड़े होते जैसे हम टीचर्स स्कूलों में कर रहे होते हैं या जो हम प्लानिंग कर रहे होते हैं हैं जिस तरह क्लासेस की, उस तरह से हमने कॉलेज के प्रोफेसर्स को कभी प्लानिंग करते नहीं देखा, इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स को भी। आई हैव डन माय एमबीए तो मैंने एमबीए में भी अपने किसी टीचर को ऐसा नहीं देखा कि वो कोई बहुत ही लंबी-चौड़ी प्लानिंग करके मेरे सामने आए हों और उन्होंने लेक्चर दिया हो। और मैंने बीएड भी किया तब भी मैंने नहीं देखा यूनिवर्सिटी लेवल पर कि कोई बहुत लंबी-चौड़ी सी उन्होंने जो है वो प्लानिंग की हो, बस वो डिस्कशन बेस पर जा रहे होते हैं। तो एज सॉर्ट के वो जो है वो इसको एज़ अ पार्ट टाइम ले रहे होते हैं। दे आर सो टेकिंग मुस्तफा इट आपको एज़ एक अ बात समझी? पार्ट एज़ अ पार्ट टाइम। सो द रीज़न कि वो उसको सॉरी अबर आई कांट हियर यू। यू आर सेइंग समथिंग? आई थॉट आप प्लीज अपनी बात कंटिन्यू करिए, उसके बाद मैं फॉलो अप क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। ओके। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो पार्ट टाइम ले रहे होते हैं और खवातीन यूजुअली पार्ट टाइम को कंसिडर नहीं कर रही होती हैं, दे आर टेकिंग इट एज़ अ पाथ कि वो जहाँ पे सर्वाइव कर सकें, जहाँ पे वो कर सकें। और यूजुअली होना क्या चाहिए कि जो अपर लेवल है उसमें भी यानी जो हायर ग्रेड्स हैं हमारे इन कॉलेजेस इन यूनिवर्सिटीज़ तो एक सर्टेन आपका उन्हें चाहिए कोटा सिस्टम होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग वुमेन्स को एम्पावर किया जाए कि इतना परसेंट आपकी यूनिवर्सिटी में फीमेल स्टाफ मौजूद होना चाहिए एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टीचर्स। ठीक है, मतलब टीचर के तौर पर आपकी यूनिवर्सिटी में इतना स्टाफ मौजूद होना चाहिए क्योंकि आप यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ तो आपको बहुत कम स्टाफ नज़र आता है फीमेल उसमें। किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का आप विज़िट करेंगे तो आपको बहुत कम लोग नज़र आएँगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई एम सॉरी मिस नमना, यहाँ पे आपसे डिसएग्री करना पड़ेगा। टीचर्स को आप कहीं भी देखें, यूनिवर्सिटी लेवल, स्कूल, कॉलेजेस, यू विल ऑलवेज फाइंड मोर वुमेन इन द फील्ड देन मैन। एंड जहाँ तक आपकी बात ये रही कि male persons like to teach at university and college level more because they're facilitated more, is what you're trying to say is कि female labor इस तरह से exploit भी होता है school level पे कि they're forced to do more work, they're forced to do extra unnecessary work that makes their life difficult. So do you think female teachers, because most teachers at school level are female, they're treated as exploited labor in ways? Can you repeat it? I can't hear you properly. Abhay. What I was trying to say is कि आपने बोला था कि क्योंकि हायर एजुकेशन में एट यूनिवर्सिटी इन स्कूल लेवल, एट यूनिवर्सिटी इन कॉलेज लेवल, यू सी के उस तरह से काम नहीं होता, ना चेकिंग का, ना करिकुलम प्लानिंग, ना डिजाइनिंग का। सो डू यू थिंक कि मेन लाइक टू गो इनटू दैट प्रोफेशन क्योंकि तब वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, और औरतें जो स्कूल लेवल पे होती हैं उनको हज़ार एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं विद क्लास मैनेजमेंट, with ensuring parent-teacher conferences and more accountability. So, do you think women are also exploited in the profession that way because predominantly most school-level? Yes, yes, exactly. This is happening because usually if you talk to a male person, वो कभी भी ना accountability अपने student की accountability को वैसे नहीं देख रहा होगा जैसे एक जो फीमेल टीचर है वो आपको अकाउंटेबल कर कर आंसर दे रही होगी कि अच्छा ये चीज़ हुई है, आपके बच्चे ने इस तरह से परफॉर्मेंस दी है और उसको किस तरह से अकाउंट फॉर करना है, वो एक मेल बहुत अच्छी तरीके से कभी भी आपको नहीं डिफाइन कर रहा होगा यूजुअली। ठीक, यानी ये जो 33% हमारे वर्कर्स वर्कआउट कर रहे हैं टीचिंग फील्ड में, इनमें से भी शायद 5% लोग ऐसे हों जो इसको बहुत अच्छी तरह से अकाउंट फॉर कर सकते हों, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द परसेंटेज है दे आर नॉट गोइंग टू वर्क आउट लाइक दिस। तो जो फीमेल टीचर्स होती हैं ऑन लाइक अ स्कूल लेवल, अ प्राइमरी एजुकेशन लेवल, तो उस स्टेज पे आपको क्या लगता है उनकी लाइफ को फैसिलिटेट करने के लिए स्कूल क्या इनिशिएटिव्स ले सकता है? एंड बिफोर यू आंसर दैट, मुस्तफा,
has wanted to add something to the previous question. So, Ms. Tawab, if you would can, like Yes, go I want forward. to add a point in a very concise Okay. manner that males generally cannot handle smaller children. I do agree with you, Imran, and don't have the patience with the teaching them women. And often mothers themselves have this natural gift. Now, add to that, the pay of primary school is truly less than secondary schools and far less than other professions as I'm well. so sorry, Mustafa. Before you continue forward, I will Yes, have yes. to disagree with you. ये कहना कि Oh, कोई मर्द या औरत इनहेरेंटली ऐसा है कि उसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो पेशेंट हो या ना हो, वो गलत होगा. आई थिंक जो बिहेवियर आप इंडॉक्ट्रिन कर लो, जिस सांचे में आपको शुरू से ढाला जाए, आप उसमें ढल जाते हैं. अगर हम लोग ये कहें कि Yes, बिकॉज मैंने from in the beginning of the in the beginning of discussion I told you कि ऐसा होता है कि जब हम शुरू से तरबियत कर रहे होते हैं बच्चों की, तो हम उनको शुरू से क्या कर रहे होते हैं कि एक सेपरेट जोन दे रहे होते हैं. जो फीमेल बच्चा होगा या बच्ची होगी, हमने उसको रोना अलाउ किया. और यहाँ पाकिस्तान में अगर कोई आप मेल बच्चा रोता है, अरे तुम मेल और रो रहे हो, क्यों क्यों मेल की फीलिंग नहीं होती. जब हम फीमेल बच्ची की तरबियत कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं खाना पकाओ, लेकिन हम मेल को नहीं कह रहे कि खाना पकाओ. दीज ऑल आर लाइफ स्किल्स. ठीक है, ये मेल और फीमेल में अलग अलग नहीं होने चाहिए. ये दोनों स्किल्स दोनों बच्चों में वैसे ही ट्रांसमिट होने चाहिए जैसा कि हर इंसान में होते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत सिर्फ एक बच्चे को, एक साइड के बच्चे को नहीं होगी, ये हर किसी को जरूरत होगी एट एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. You're very right. I completely agree with you. Indoctrination जो बच्चियों में छोटी उम्र से की और जाती है, इसी उसकी वजह से वजह इसी से वजह career से जो prospect. इमोशन बिल्डिंग है, इमोशन बिल्डिंग हो रही होती है, तो वो बच्चों की वैसे ही हो रही होती है. Yes. So जो शुरू से indoctrination होती है, वो बहुत ज़्यादा affect करती है कि औरतें मुस्तकबिल में जाके किस तरह के प्रोफेशन को अपनाएंगी, जिस वजह से शायद वो टीचिंग अपनाती हैं. फिर उसके बाद ये साइकिल कंटिन्यू होता है, because teaching is considered to be one of the only more appropriate professions for women. एग्जैक्टली. it's an appropriate for male as well. It वो is प्रेफर sure. करते हैं कि वो हायर लेवल को पढ़ाएं क्योंकि वो वन गो इंस्ट्रक्शंस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि एक दफ़ा बता दिया बच्चे ने समझ लिया, दैट इज़ इजी. जो छोटे और प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उनको बार बार आपने रीइंफोर्समेंट करनी होती है. वो शायद मेल्स के लिए मैं समझती हूँ एक इजी वे नहीं होता क्या आपको कम्युनिकेट लगता करने है का. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते? नहीं नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक जो टेम्परामेंट की बात होती है ना, वो ज़्यादा मैं कहूँगी कि विमेन में ज़्यादा है परसेंटेज उसका टॉलरेट करने का. Uneza, do you have something They even to add? can't be tolerate the bossy behavior of the principals as well. तो ये तो आई थिंक हमारा एक जनरल कंसेंसस है at this point कि women who work as teachers at a primary and secondary level are exploited. They're made to do extra work. They have to handle school politics and bureaucracy with principals. They're made to stay back for PTMs, extra work, remedial classes. There's no doubt about the fact that they are made to do extra work, and men don't want that. They want to do just as much as they're paid for, so they're better off in the trade, I guess. I think it leads also to the larger discussion that women in every workforce are expected to put in more work than men. They have to prove their Exactly. worth. Yes, that is right. Actually, what happened? I have switched my job from finance to teacher, so I have experience of both sides. So when I was in my finance field, I usually do the work faster than the male one. And you know what? The male one said to me that भाई आपने तो बहुत ही जल्दी काम कर लिया, इतनी जल्दी तो आपको करके नहीं दिखाना चाहिए था, थोड़ा आहिस्ता करा करें, इस तरह तो बहुत काम आपको मिल जाएगा. तो होता यही था कि मुझे बहुत काम मिल जाता था उस वक्त. तो जो है क्या कहते हैं, उस पे उनको जो लगता था वो ये लगता था कि भाई इनको ज्यादा काम मिल गया तो ये बॉस की फेवरेट हो गई है, एंड दिस एंड दैट ऑल दिस टाइप ऑफ स्टफ वी हैव टू फेस ओवर देयर. और जब मैं टीचिंग फील्ड में आई तो मैंने देखा कि भाई टीचर्स तो ऑलरेडी टीचर्स के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, जो क्लास मैनेजमेंट से लेकर आपके जो पेरेंट्स रिप्रेजेंटेशन है उस तक आपका बहुत ज्यादा बर्डन है टीचर के ऊपर.
और टीचर को ऐसा करना होता है. पीटीएम इज नॉट ओनली द वे कि हम पेरेंट्स से कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं, उसके अलावा भी जो हमारी कॉपीज जारी होती हैं, उसके अलावा भी जो हमारे लेक्चर जा रहे होते हैं, अगर बच्चा किसी चीज़ में परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसके लिए हमें अकाउंटेबल होना पड़ता है और हमें आंसर करना पड़ता है कि वाई, कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रही हैं, क्या प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है. तो वो जो ट्राइंगल है तीनों का, यानी टीचर का, स्टूडेंट का और पेरेंट्स का, इट शुड बी देयर. और अगर मैं मेल टीचर की बात करूं, अगर मैं एक ट्यूशन टीचर ही मेल रख लूं अपने बच्चों के लिए फॉर एग्जांपल, तो मैं जब उससे 2 दफा पूछूंगी, 3 दफा पूछूंगी, चौथे दिन वो मेरे घर नहीं आएगा. कहेगा कि नहीं, मैं इतने सवालों के जवाब नहीं दे सकता, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू बी देयर. तो मैं आई एम नॉट गोइंग टू टीच योर चिल्ड्रन. तो फॉर दिस कॉज, कि अगर आपको इतना परफेक्ट चाहिए तो आप मुझे इतने पैसे दें तो फिर मैं आऊंगा. it it I think it personally happens to me, that's why I'm telling people. Miss Sabha, would you like to add something to the conversation? यस एग्जैक्टली, आई डू एग्री विद यमुना. इस तरह की भी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेन फोकस है वो ये कि पर्क्स नहीं होते, शायद इसीलिए मेल टीचर्स इतने अवेलेबल नहीं हैं टीचिंग फील्ड में. पर्क्स नहीं है, कोई उनके पास अलाउंसेस नहीं है, उनको इतना एक्सपोजर नहीं दिया जा रहा. दे आर द मेल ब्रेड विनर ऑफ देयर फैमिली, एंड these are the problems they have to face. I think I completely agree with you. Man, the fact that teachers aren't facilitated at all, they're not provided the same level of compensation as the work they put in. I think it's a very perfect note to end this session on, that we need to strive to create an environment for teachers where they are given the level of compensation in accordance to the work they do. They should have healthy working environments where there's boundaries. कि इस हद तक मैं काम करूंगी, इसके बाद मुझे ज़्यादा extra effort डालने की permission नहीं जाएगी. I think we don't respect teachers enough as we should, considering the fact that they're literally making a generation of people come forward. We need to change the way we look at teachers as कि ये तो बस मेरे बच्चों को पढ़ा रही है 8 दिन के लिए, like a part-time mother, I'd say. We treat them as such, so I think we need to increase the level of respect we give them in accordance to all of that. And with this, I think we brought this session to a conclusive end. I think it's a good place to end. Thank you so much, Ms. Sabah, and thank you so much, Ms. Yumna, for being here with us today and sharing your opinions and your insight on the issue. You are It was lovely welcome. speaking to both of you. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Hi, Yumna. Hello. Hi, Sabah, I hope कैसी that you हैं will आप? be connected later हाँ. as well. Alhamdulillah. What do you do, by the way? How was? I am working as a lead teacher, and I'm also working as a trainer. I'm running the platform Ustad right now, and let's see what's going on in the future. I'm All working right. as a lead Ask the teacher in moderator Ilm to School. provide me your number. We will be connected, inshallah. Okay, done. I will. Okay, thank you. Thank you. Okay, Okay. Allah Hafiz.